any judgment that in such circumstance where you have married and then you have she has given birth to how many child? She says 4. I am already married man, my lord. I live at Delhi and I am a driver earning rupees 6,000 per month, my lord. That is my case, my lord. जो हम अभी पढ़ रहे थे, तो he that saying कोई भी गया था, he saying पारा 14 में कहा है कि विपक्षी मोहम्मद इलियास की शादी जो आवेदिका के साथ हुई थी, कौन गया था? उसमें मेरे जगह कौन गया था नहीं जानता हूँ। इसी के बेसिस पर कौन गया था उससे क्या मतलब है? वो तो ये नहीं कह रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। No, point is, my lord, that on his statement, the learned court below decided the issue against. Please, exaggeration if I say that even you have not gone through the deposition and have filed the revision application. See the cross examination. एग्जामिनेशन इन चीफ आपको पढ़ के सुना दिया हमने। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं। आवेदिका के पिता का नाम किस्मत मियां, मुकदमा की हो कुछ नहीं, केस क्या था कि झगड़ा करके खुद अलग हो गई हो, तो यही सजेशन है। नहीं, जजमेंट में तो आ गया है। ठीक, हम जजमेंट में क्या है तो अभी देखते हैं। पहले आप ये तो देखिए ना कि आपके क्लाइंट का केस क्या था। आप अपने क्लाइंट के केस से अलग केस तो नहीं बहस करेंगे ना। वहाँ की गलती के चलते हम लोग उसको कैसे। आप देखिए फिर आपकी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अब इस तरह की बात मत कीजिए। ट्रायल कोर्ट में अगर कुछ जो गवाही होगी उससे अलग हम रिविजनल कोर्ट में जाएंगे क्या? आप बहस कर सकते हैं क्या उससे अलग कुछ? Yes, please. The maintenance case has been filed by the opposite party number. How much is the amount? 3,000 has been fixed, my lord. My lord, 3,000 only? Only, my lord. Why it should be interfered with? My lord, actually, my lord, the opposite party says, my lord, that at the time of marriage, her age was 10 years, my lord, as per Nikah-nama. And my age is, my lord, 15 years, though I am 42 and odd, my lord. Yes. First thing. Second point is, my lord, the Mulvi, in his cross-examination, he says, my lord, that what he will does... what will be the position? Suppose it was a child marriage. That is illegal, my lord. Suppose it That was is a void marriage. That is? Void marriage, my lord. Void My lord, marriage. In one case, in our own Patna High Court, my lord, in which, my lord, a case was decided in which it was held, my lord, that when a girl attains puberty in Mohammedan law, it was decided, my lord, that after 15 years, my lord, she is able to marry without her father's consent, my lord. Now, in this case, my lord, when the age of the girl was 10 years, my lord, at the time of marriage, my lord, and the law also says, my lord, that such type of cases, my lord, it is void marriage, my lord. Show me any judgment that in such circumstance where you have married and then she has given birth to how many child? She says 4. I am already married man, my lord. I live at Delhi and I am a driver earning rupees 6,000 per month, my lord. That is my case, my lord. Now, my lord, in her cross-examination, my lord, she says, my lord, she does not know how much income of her husband, my lord. Is there any declaration to the effect that this marriage is void ab initio? My lord, I shall be reading, my lord, one, what is the status of marriage, in which, my lord, age of discretion has been... You are reading from which book? It is, my lord, Mohammedan law by Commentaries on Mohammedan law, Amir Ali, my lord. Justice S.H.A. Raja. Yes. Page 1297 in this case, my lord, in this book, my lord. The age of discretion, that has what the law says, my lord. Poverty and discretion constitute, accordingly, the essential conditions of a capacity to enter into a valid marriage of contract. A person who is an infant in the eye of law is disqualified from entering into any legal transaction and is consequently incompetent to contract marriage. My case is, my lord, that at the time of marriage,
if my lord may kindly come to You my can brief. avoid the contract. Suppose you are a minor at the time of marriage. Then it also says, my lord, that when I become major, I have got option to refuse that marriage, my lord. So that is voidable marriage. Yes, It's not a void ab initio. but the That is a voidable marriage. point is, After attaining majority, yes, did you challenge this? Did you got a declaration that that is it is not a valid marriage? this onus is for the opposite party, my lord, not Why? for me. Why? I'm already, You are claiming that it is against your will. You are claiming that it is against your will. my lord, it is just like, my That lord, is why I asked you a basic question, whether the child marriage is to be declared void ab initio. No marriage in the eye of law right from beginning. but the point is, my lord, is he Whether just, it is a void marriage or a voidable marriage. no, if my lord says it is a voidable marriage, My lord says, you say I the say, my law. lord, that it is a void marriage, my lord. How? You are not able to show. Please show me that how it is a void marriage. Because he is 10 years old, my lord. So it's a child marriage. Yes. But there is a difference between void and voidable marriage. But my lord, the second point is, my lord, No, let us. on this point let us also, be my lord, clear on the on this first point also, my lord, Please, the yes. person who contracted the marriage with me, my lord, that Maulvi, if my lord may kindly come to, Suppose she was only 10 years old. मान लिया आपकी बात. नहीं तो वो भी तो मौलवी भी तो कह रहा है कि हम नहीं गए थे, मेरे जगह पर कौन गया, I don't know. My lord may kindly come to page 6 of the judgment, my lord. Yes. No, my lord, it begins, my lord, at page 8, my lord. Page Well, 8. Page All 8, page 7 का पैराग्राफ 13, my lord. Yes. विपक्षी संख्या 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में विपक्षी साक्षी संख्या 2 के द्वारा साक्ष्य में कहे गए कथनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया. एक साक्षी का आवेदिका की तरफ से परीक्षण किया गया. इसने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में स्वीकार किया, अपने ग्रामीण रमजान अली को जानता हूं. रमजान अली गांव घर में निकाह वगैरह पढ़ाता है. इसने पैरा 14 में कहा, विपक्षी मोहम्मद इलियास की शादी जो आवेदिका के साथ हुई थी, उसमें मेरे जगह पर कौन गया था मैं नहीं जानता हूं. He himself concedes this fact, my lord, that he does not know who has gone to. Oh, no. Who is this विपक्षी साक्षी संख्या 4? पैराग्राफ उसका पेज जो हम अभी पढ़ रहे थे. So he is saying कोई भी गया था. He is saying पारा 14 में कहा है कि विपक्षी मोहम्मद इलियास की शादी जो आवेदिका के साथ हुई थी, कौन गया था, उसमें मेरे जगह कौन गया था नहीं जानता हूँ. इसी के बेसिस पर कौन गया था उससे क्या मतलब है. वो तो ये नहीं कह रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई थी. No, point is, my lord, that on his statement, the learned court below decided the issue against. Please read further. Yes. इसने पैरा 15 में स्वीकार किया है कि अमीना खातून बड़ारा थाना कांड 5697 हमलों के विरुद्ध दाखिल की थी. मेरा बेटा दिल्ली पंजाब में कमाता है, वह गाड़ी का ड्राइवरी करता है. इस साक्षी ने आवेदिका द्वारा दिए गए इस सुझाव से इनकार किया है कि मैं अमीना खातून से खुश नहीं रहता था, इसलिए उसको भगा दिया. उसके बाद मेरा बेटा दूसरी शादी किया है. और एक चीज और है, my lord, before this case, my lord, in 97 she has filed a case, my lord, and after that case, in which, my lord, we have already we were acquitted by the learned court below, this case has been filed, my lord. We don't know even, my lord, who is this lady, my lord. I am already a married person. Do you have a copy of the deposition? Have you included it? Deposition नहीं, that is not. नहीं है. नहीं. Then how can you argue? नहीं, उसके statement पर. But my lord may kindly consider this very fact, my lord, that You have filed this revision without looking into the evidences. नहीं evidence जो You have not gone through the evidence and you drafted the revision application. Very good. Family court has only recorded few parts of the deposition. If you should have enclosed the complete deposition. No, my lord, I have got it. I'm sorry. Paragraph 3. Yes.
Please give me. Now you see this OPW2, deposition of witness number 4, Yes, he is Maulvi, my lord. Maulvi, Yes, for the Wadi. yes, He appeared for the applicant wife, yes. है ना? He says यह है कि आवेदिका का निकाह मैंने विपक्षी मोहम्मद इलियास पिता स्वयंसो के साथ करवाई थी। यह कि आवेदिका का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार विपक्षी स्वयंसो के साथ दिनांक 25/3/90 ईस्वी में आवेदिका के घर पर ही संपन्न हुआ। इसमें 26/3/90 है। और दूसरा चीज है उसमें। देखो 1 मिनट रुकिए ना, आप जल्दीबाजी में क्यों हैं? नहीं, हम पक्षी आवेदिका को अपने घर पर रखने के पश्चात पक्षी पंजाब कमाने के लिए चला गया। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि 8,000 रुपया भरण पोषण किया मांग किया है, वो सही है। जरा इनका क्रॉस एग्जामिनेशन देखा। यस, प्रति परीक्षण। ये तो एडमिट कर रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में। सेशन जज के ऑर्डर में कुछ और। इसीलिए तो आपको हमने कहा कि आप डिपोजिशन नहीं लगाते हैं। आप लोग 100 में 99% केसेस में हमने देखा है यहाँ रिवीजन एप्लीकेशन में lawyers are not enclosing the deposition, and some of the lawyers have admitted at the bar that they have not gone through the deposition. I don't know how revision applications are filed. I can safely say that 90% of the advocates, and it would not be an exaggeration if I say that even you have not gone through the deposition and have filed the revision application. See the cross examination. एग्जामिनेशन इन चीफ आपको पढ़ के सुना दिया हमने। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं। आवेदिका के पिता का नाम किस्मत मियां। मैं वर्ष 2017 में गांव में अकेला मौलवी था जी। मैंने अमीना खातून के गांव में इलियास पिता अमीना खातून की शादी मोहम्मद इलियास उस्मान से करवाया था। उसमें फादर का नाम क्या है अमीना खातून का? कोई नाम नहीं है दिया हुआ, कोई नाम नहीं। आप पढ़िए तो आप खुद पढ़िए जरा पैराग्राफ 12 कीजिए जरा। एविडेंस बहुत जरूरी होता है लगाना, आप लोग लगाते नहीं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। And the family court is correct in saying this in paragraph 9. Family court has rightly recorded it in paragraph 9 of the impugned judgment. नहीं, उसके बाद जो पैराग्राफ 8 में जो लिखा हुआ है कि he does not know। आप पहले एक एक करके क्लियर कीजिए। जी जी। ये मौलवी ने जिसने प्रूव किया है, रमजान अली मौलवी, ये एडमिट कर रहा है ना, ये कह रहा है कि हम गांव में अकेला मौलवी थे उस समय और हमने ही शादी कराया। एग्जामिनेशन इन चीफ में भी सेइंग एंड क्रॉस एग्जामिनेशन भी उस पॉइंट पर लिया आपने। एंड ही हैज आंसर्ड कि हमने करवाया था शादी। आवेदिका का है नहीं इसमें। आप आवेदिका का उम्र उस समय 10 वर्ष था। फिर आप उस लाइन पर भी आप नहीं बहस कर रहे हैं ना। आप मुझे दिखा दीजिए ना कि 10 साल था तो क्या हो गया, वाइट मैरिज कैसे हो गया।
वाइड मैरिज केस होगा. हाउ 125 CRPC विल बी इंटरप्रेटेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द neglected wife and children? There was some purpose behind incorporating section 125 in the CRPC. It's a piece of social legislation. Purposive interpretation उसका करना होगा, वैसे नहीं होगा आप जिस तरह से कर रहे हैं. Again, my lord, the point will be, my lord, that I am getting only 6,000. That, and she also concedes this very fact, my lord, that she has given, my lord, I have so much property, so दिल्ली तो छोड़ दीजिए, पटना में ड्राइवर नहीं मिलेगा आपको 6,000 रुपए में. ये उस समय की बात कह रहे हैं. समय की बात भी अगर मान लें, 4 साल पहले कोरोना के 4 साल 7,000 में काम कर 4 साल बहुत लंबा समय नहीं हुआ है. उस समय तो 6,000 4 साल पहले भी 6,000 में मुश्किल था मिलना पटना में, और दिल्ली की तो बात ही छोड़ दीजिए. दिल्ली में 4 साल पहले 6,000 रुपया में ड्राइवर मिलना, मेरे ख्याल से तो नो रीजनेबल पर्सन हु हैज एनी स्लाइट आइडिया अबाउट इट विल एक्सेप्ट योर वर्सन. My lord, this judgment is of... And moreover, tell me one thing, I ask this question to everybody. Yes. If your wife and minor children can live in 3,000 rupees, why you alone cannot live with 3,000? 6,000 मान लिया आपका इनकम हम, तो 3,000 में आपकी वाइफ और बच्चे को रहना होगा, उनको रहना है 3,000 में, और आप अकेला 3,000 में नहीं रहेंगे. नहीं तो हमको भी तो फैमिली है. I have also अब I've got 4 आपने, children also, my lord. हाँ, तो अब आपने ये जो रिस्क लिया ना, दूसरी शादी करना और फिर उससे नहीं, शादी तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये तो आफ्टर थॉट है, my lord. In 1999, my lord, a case was filed, my lord, and after this, तो why don't you get it declared from a competent court of law? अरे रेमेडी तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना. You have not applied for proper remedy in accordance with law. बोलिए अब क्या करना है. I have given you a hearing. थोड़ा कम कर दिया If जाए. you invite a judgment, I will dictate, or otherwise नहीं, जजमेंट तो होगा ही. choice is yours. जजमेंट करा दीजिए. But Are considering you this very fact, are you paying anything to your wife? ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है. नहीं दे रहे हैं ना. नहीं, दे भी रहे होंगे तो हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो आप अगर नहीं दे रहे होंगे, then you will be liable to pay cost also. I will impose that condition. लिखिए. Heard land counsel for the petitioner at length. Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the order dated 23rd August 2018, passed in maintenance case number 330 of 2012 by the learned Principal Judge Family Court Purnia. Next, by the impugned order, the learned Family Court has allowed a maintenance amount of rupees 3,000 payable to the applicant wife by her husband, who is petitioner before this court. Next, learned counsel for the petitioner has raised an argument saying that at the time of alleged nikah, the age of the applicant was only 10 years, Annex 2. therefore the marriage cannot be said to be a valid marriage, and the petitioner would not be liable to maintain the applicant wife. एक चीज और है उसमें, Annex 2 में, the name of the witnesses has not been mentioned. That Full also stop. says, my lord, Full that stop. witnesses should be there, my lord. Learned counsel has further submitted that on the Nikahnama there is no, the name of the witnesses are not duly mentioned.
Full stop. Next, the another point raised on behalf of the petitioner is on the quantum of income of the petitioner. Full stop. It is stated that the petitioner was working as a driver at Delhi, and at the relevant time his monthly income was only rupees 6,000 per month. Full stop. Under these circumstances, award of maintenance of rupees 3,000 is excessive. Next, this court has generally ये गवाही की कॉपी दे दीजिए एक बार. This court has gone through the materials available on the record. Full stop. The certified copy of the deposition of the witnesses a copy of the deposition of the witnesses have also before this court. Full stop. On perusal of the deposition of the applicant, it appears that according to her, the nikah took place on 26/3/1990. Full stop. It is alleged that after her nikah, when she went to her sasural, she was being tortured by her husband and in-laws. Full stop. After some time, her father brought her to his place, and thereafter the husband as petitioner left for Punjab. Full stop. She has made certain allegations against her in-laws, which are not necessary to be taken note of in the present proceeding. Full stop. Next, the applicant has deposed that for last about 3.5 years, her husband is engaged in the business of running of vehicles in Delhi. Was engaged in running of vehicles in Delhi, but recently he had sold the vehicles and had indulged in the business of sale and purchase of food grains in Purnia. Full stop. He had purchased 2 bighas of land, and from the business he earns around rupees 40,000 per month. Full stop. The applicant alleged that her husband was not giving her any maintenance, and she is being neglected. Full stop. She was cross-examined by the opposite party.
And in her cross examination also she reiterated that her nikah was performed by Maulvi and a nikahnama was prepared. Full stop. She asserted that her nikahnama has been placed on the record of this case. Full stop. She was suggested by the opposite party that she had left her husband's place after quarrel and she doesn't like. देखिए क्या आप केस बहस कर रहे हैं और क्या है, इसीलिए कहते हैं गवाही नहीं लगाते हैं आप लोग और कुछ भी बहस करते हैं। ओरिजिनल कोर्ट में केस कुछ है, हाई कोर्ट में आप अपने बहस से उसको बदल देते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड एडवोकेसी। आप इसमें ये रीट आप बहस नहीं कर रहे हैं ना कि कुछ भी अपने तरफ से आप एक अपना ओरिजिनल कोर्ट है यहाँ पर आपने बहस कर दिया। बस गवाही क्या आई है आपने देखा ही नहीं है। कहीं अपोजिट पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक लाइन भी सजेस्ट नहीं किया कि देखो तुम्हारा जो शादी निकाह हुआ था मेरे साथ कोई निकाह वैलिड नहीं था, तुम्हारा उम्र ये था, तुम जो है ये गलत मुकदमा की हो। कुछ नहीं, केस क्या था कि झगड़ा करके खुद अलग हो गई हो। यही सजेशन है। नहीं, जजमेंट में तो आ गया है। ठीक, हम जजमेंट में क्या है तो अभी देखते हैं। पहले आप ये तो देखिए ना कि आपके क्लाइंट का केस क्या था। आप अपने क्लाइंट के केस से अलग केस तो नहीं बहस करेंगे ना। आपके क्लाइंट का केस यही था जो सजेशंस दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि अपने पति से झगड़ा करके खुद अलग हो गए हैं तथा उनके साथ रहना पसंद नहीं किया। यही आपका डिफेंस। दूसरा है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा दावा गलत है, जनरल स्टेटमेंट ना, बल्कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में आप फंस गए हैं जाकर के। जो चीज उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं कहा वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कहवा दिया उससे। अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने नहीं कहा कि आप सेकंड मैरिज किए हैं और बाल बच्चा है आपको, कहीं नहीं कहा। वो हम ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं कहा है। लेकिन आपने क्रॉस में उससे सवाल किया और उसने कह दिया हम मोहम्मद इलियास के साथ अब नहीं रह सकते हैं चूंकि उसने उसके दूसरी शादी में 5 बाल बच्चा हो गया है। फंस तो गए आप अपने। नहीं तो हमारा केस था कि हम पहले ही शादीशुदा थे और जो आपका केस तो नहीं था ना। आपका केस तो सामने है, दिख रहा है। ओरिजिनल साइड का काम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ओरिजिनल साइड जो है, इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाद में पहले थोड़ा दिन जो है ओरिजिनल कोर्ट का भी काम सीखना चाहिए। आप केस यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो केस आपका है ही नहीं निचली अदालत में, और रिवीजन में आप कहां इंप्रूव कीजिएगा। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां सजेशन देते हैं, योर सजेशन। जो भी आपका केस है, प्रिंसिपल क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का कि जो आपका केस है वो आप लाइएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो आपने कहीं लाया ये चीज, यहां देखो ये हमारी शादी जो है ऑलरेडी पहले से हो रखी थी और ये जो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी शादी हुई है वो गलत है, ये तुमने झूठा केस बनाया है। तुम्हारी उम्र उस समय सिर्फ 10 साल की थी, कहीं नहीं आपने बोला। वहाँ नहीं पूछा, लेकिन हम लोग यहाँ इम्प्रूव किए उसको थोड़ा। नहीं मानिएगा वो अलग बात है। आप हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लॉयर। हम समझ रहे हैं सब। हाँ तो समझ रहे हैं तो बोलिए ना, थोड़ा सा जो है समझ रहे हैं उसको बोलिए।
कोई जरूरी नहीं है कि समझने के बाद भी आप गलत ही बोलते नहीं, हैं। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। आई कंसीडर। आपका केस ही नहीं है ये जो आप बहस कर रहे हैं। आपका केस रहता तो आप बोलते ना क्रॉस एग्जामिनेशन। कहीं नहीं आपने बोला, उल्टा आपने उसको ऐसा बुलवा लिया कि अब ये भी फैक्ट आ गया। क्या लिखा है, लीजिए ले लेते हैं इसको भी। She was by opposite party that she had left her husband's place after quarrel, and she doesn't like. Full stop. The applicant denied this suggestion. Full stop. She denied another suggestion of the opposite party that her claim is wrong. Full stop. Further, in response to the question put to her that why did she not want to stay with her husband, she categorically answered that now she cannot live with the opposite party because he has got 5 children from his second marriage. Next, the marriage, full stop. The case of the applicant has been supported by 3 other witnesses. And the applicant witness number 4 is the Maulvi who has stated that he was the only Maulvi in the village at the relevant time, and he had performed the nikah between the applicant and the opposite party. Full stop. Although the opposite party cross-examined the Maulvi within bracket AW4, but no contradiction could be taken out from his deposition. Full stop. Next. This court finds from the depositions placed before this court that in the court below no suggestion was thrown to the applicant that there was no valid marriage between the petitioner and the opposite party. Full stop. There was no suggestion that the applicant was only 10 years old. Full stop. Further, there was no suggestion that the applicant is having sufficient income to maintain herself. Full stop. On the other hand, there is an admission of the opposite party witnesses that he was earning ₹6,000 per month as driver. Full stop. The applicant has categorically stated that her husband is earning ₹40,000 per month from his business in dealing with food grains. Even this claim of the applicant has not been contested by the opposite party in course of cross-examination, because no question at all was put to her इसमें एक to चीज आप बोले, controvert her statement. रुकिए, आप देखते रहिए क्या क्या है। वहाँ की गलती के चलते हम लोग उसको कैसे आप देखिए, फिर आपकी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अब इस तरह की बात मत कीजिए। ट्रायल कोर्ट में अगर कुछ
हाँ, जो गवाही होगी उससे अलग हम रिविजनल कोर्ट में जाएंगे क्या? आप बहस कर सकते हैं क्या उससे अलग कुछ? फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट में जो आया है उससे अलग बहस कर सकते हैं हम कोई? लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग ज्यादा वाइजर कोर्ट्स में चले आए हैं। देखिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जुरिस्डिक्शन आपका होता है आर्टिकल 226 का, एक जुरिस्डिक्शन है ये रिविजनल जुरिस्डिक्शन, वेयर दिस कोर्ट इज सिटिंग अंडर सेक्शन 397 Red Book 401 CRPC. There are certain principles which govern this jurisdiction. To what extent a revisional court can go into the That is, show me any judgment which say that revisional court can interfere with a finding of fact. वो केवल Yes. अपील में कर सकते हैं। रिवीजन में भी कर सकते हैं if you are able to show that the finding recorded by the court is perverse Yes. and it is not based on the materials on the record. तो हम तो आपके डिपोजिशन से लिखवा रहे हैं, हम तो इम्प्यून्ड ऑर्डर में अभी घुसे भी नहीं है, इसीलिए तो कहां आपको स्कोप है? इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज होता है, गवाही को नहीं लगाते हैं आप लोग, गवाही लगा दीजिए तो बहुत आसान होता है केस को समझना। इसलिए कुछ है ही नहीं है, क्वांटम ऑफ इनकम पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है उस पर। बोलिए, यू हैव डन योर बिट टू सेव योर क्लाइंट, अब इसमें कोई स्कोप नहीं है। हाँ, क्या लिखा? The applicant has categorically stated that her husband is earning rupees 40,000 per month from his business in dealing with food grains. Even this claim of the applicant has not been contested by the opposite party in course of cross-examination because no question at all was put to her to controvert her statement. Next, in the entirety of the facts and circumstances of the case, comma, both the pleas taken on behalf of the petitioner, as mentioned above, would fail. Full stop. In the revisional jurisdiction, comma, this court cannot allow learned counsel for the petitioner to improve upon the evidences and make out a case on his own wisdom. Full stop. This court is sitting in its revisional jurisdiction, and on finding that there is no perversity, comma, illegality or infirmity with the impugned judgment, this court would refuse to interfere with the impugned judgment. Full stop. This revision application has no merit. It is dismissed accordingly. Full stop. Let the learned principal judge, family court, Purnia, proceed to enforce the impugned order. Full stop. Next, before this court parts with this order, comma, the judicial conscience of this court is of the view that this maintenance case being that of the year 2012 and the applicant wife has remained waiting to get the fruit of the judgment for more than 4 years and in total for 10 years since the date of filing of the application, comma, in case it was found that the petitioner has not made payment of the maintenance amount to his wife for all these years, comma, he would also be liable to pay a cost of rupees 25,000, which will be realized from him together with the outstanding amount as early as possible, and the same will be made available to the applicant wife.